हॅलो, मी ईशा. निंपराग. तुम्हाला माहितीच असेल की आम्ही एक नवीन उपक्रम सुरू करतोय ज्यामध्ये आम्ही वेगवेगळ्या करिअर क्षेत्रातल्या लोकांची गप्पा मारतोय, त्यांच्या क्षेत्राबद्दल जाणून घेतोय आणि ही माहितीचा उपयोग आपल्या सर्वांना होईल आणि स्पेशली जे 10वी-12वीतले मुलं आहेत त्यांना या करिअर इन्फॉर्मेशनचा उपयोग होईल हा आमचा हेतू आहे. चला चला तर तर मग. मग. हॅलो. आज आपल्यासोबत माझा एक लाडका मित्र मयूर आहे. मयूरनी VJTI मधनं IT इंजिनिअरिंग केलंय आणि आता तो PwC मध्ये कन्सल्टंट म्हणून काम करतो. सो हाय मयूर, थँक्यू फॉर जॉईनिंग अस टुडे. Hi Ishatai, thank you for having me here. बिफोर वी स्टार्ट मी एक सांगते की आजचा चॅट इज गोइंग टू बी मोर ऑफ हिंदी, मराठी आणि इंग्लिश मिक्स. सो तुला ज्या लँग्वेज मध्ये तू कम्फर्टेबल आहे, प्लीज गो हेड विथ दॅट. Works. सो चालेल. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज की तू क्या करता है एग्जैक्टली? So basically, I'm a tech consultant at PwC. मैं basically consultant हूँ. Tech consultancy मतलब I'm working as a consultant for SAP right now, but it is not limited to SAP as of in general tech consulting. आप कोई भी technology का consulting कर सकते हो. PwC में there's a proper line of service called advisory. So advisory के अंदर आपको management consulting, tech consulting, etc., risk consulting सब होता है. So उसमें से एक है tech consulting that I do. तो तो तूने ये क्यों चूज किया, मतलब टेक कंसल्टेंसी क्यों? So honestly, जब भी मेरा placement हुआ था, we weren't told that we were gonna be exactly tech consultants. The thing is, मैंने third year में अपने engineering में PwC में internship किया था, and then based on that, I got a pre-placement offer as a PPO. And after that also, basically, you just from the college placements, they just tell you that you are placed in PwC, but only after the placement, you get this. They decide what roles to give you. So a lot of people got different roles. Like some went into cybersecurity, some went into tech consulting, some in some other stuff. So it's not like I chose tech consulting as such. It was that I was given, and I was from the COVID batch. तो हमारा क्या है कि प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हमारा प्री प्लेसमेंट ऑफर वाज सपोज टू बी इन जून, बट हमारा जॉब स्टार्ट होते होते तभी 2020 में अराउंड अक्टूबर तक हो गया था. तो आई मीन इट्स नॉट लाइक हम लोग ने डिसाइड किया अभी हमने बोला कि हाँ अक्टूबर में, तो अक्टूबर में वॉट एवर वी आर गेटिंग वी स्टार्ट विद इट. दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. पण तुला आवडतंय टेक कंसल्टंट? हो मला कन्सल्ट जनरल आय लाइक इट. इट्स फन सो व्हॉट एव्हर हॅपन्ड. फॉर द गुड. या. इट्स ऑल गुड. नाईस. सो तू म्हणालास की यू डिड नॉट एंटर दिस फील्ड नोइंगली, पण अननोइंगली यू एंटर्ड इनटू टेक कंसल्टन्सी So अँड नाउ. there's there's a catch over there. Basically, I'm an IT engineer. Okay, so most of the people in my batch got placed as a coder, and third year में मैं मेरा काफी clear था कि मुझे coding नहीं करना है for full time. Okay, for whatever reasons. So I knew that I did wanted to do something else, and I was good with speaking. I was good with like interpersonal skills. मेरे soft skills अच्छे थे, and that is what in fact helped me get the uh, internship at PwC itself. So I knew कि somewhere around the line मुझे थोड़ा बहुत hunch था कि शायद मैं कुछ कर लूंगा इसमें. So some of it was थोड़ा luck, some of it was just a hunch. So it all worked out. It's not like मैंने just decide किया था कि मुझे consulting करना है या मुझे सिर्फ coding नहीं करना है वगैरह वगैरह. It just played out along the way. नहीं, I know your soft skills are good. I know that. So थोड़ा coming back, why did you choose IT engineering in the very first place? Uh, I was in 11th and 12th. तो 10th में मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था. एंड मेरा सिर्फ क्लैरिटी इतना था कि मुझे मैथ्स और फिजिक्स पसंद है. मुझे केम इतना पसंद नहीं आता था, मुझे बायो बिल्कुल पसंद नहीं था. एंड तभी मुझे कॉमर्स और आर्ट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मे बी इंजीनियरिंग इज द वे फॉरवर्ड. इंजीनियरिंग में भी कौन सी इंजीनियरिंग चूज करनी थी मुझे पता नहीं था. देन वी हैड आवर एंट्रेंस एग्जाम कॉल्ड सीईटी. तभी जेई हमारे बैच के लिए नहीं था, तो वी हैड टू गिव CET to get admissions. And tabhi like VJTI was one of the best options out there in Mumbai for us. So it's not like I was aiming for VJTI IT specifically. मैंने बस CET diligently पढ़ा and luckily मेरा score अच्छा आ गया उसमें. So I got into VJTI IT and IT भी मैंने select नहीं किया था. मुझे सरदार पटेल में कॉम्स मिल रहा था. एंड फनी स्टोरी, सो जब मैं
मेरा जब एडमिशन नहीं हुआ था, मैं वैकेशंस में मेरे क्लब में बैडमिंटन खेलने जाता था। तो सिर्फ एक दिन पहले एडमिशन जब सिक्योर करने थे, उसके एक दिन पहले एक बंदा मुझे मिला था वाइल प्लेइंग बैडमिंटन। ही वाज फ्रॉम बीजेटीआई एंड उसने मुझे बताया था कि नो मैट लाइक मुझे कंप्यूटर साइंस मिल रहा था विच रिक्वायर्स लाइक अ बिगर कट ऑफ, हायर कट ऑफ, जो सरदार पटेल में मुझे मिल गया था। सरदार पटेल वाज एन इक्वली गुड कॉलेज एट दैट टाइम। बट उसने मुझे बोला था कि अगर तुझे आईटी भी मिल रहा है लेकिन अगर वो बीजेटीआई में मिल रहा है तो देन डोंट गो फॉर सरदार पटेल, गो टू बीजेटीआई। सो दैट्स हाउ आई लैंडेड इन बीजेटीआई। Okay. So, या but basically तुला computer related करायचं होतं, you were quite firm with it. ऑनेस्टली नॉट, वो मैंने बस आई जस्ट प्लेड अलोंग, मुझे अवेलेबल था वो मैंने ले लिया। तो इंजीनियरिंग में मैंने ऐसे ओवरऑल गेस कर लिया था कि मैकेनिकल में क्या होता है, सिविल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, ईएक्सटीसी में क्या होता है, कंप्यूटर्स में क्या होता है, आईटी में क्या होता है। आउट ऑफ ऑल दैट आई थॉट कि ठीक है चलो मैं आईटी कंप्यूटर्स ले लेता हूँ। Okay. So that was the plan. I mean, not the plan, just what happened. पण काय जे काय झालं it happened. Yeah, definitely. I think in hindsight, whatever decisions I took, it made sense in the long run. So you know how Steve Jobs says you can only connect the dots backwards. So जब मैं ये सब कर रहा था तब मुझे पता नहीं था कि whether I'm doing something right or wrong, but in hindsight it makes sense. Great. अजून एक कमिंग बॅक टुवर्ड्स वर्क लाईफ, टेक कन्सल्टंट किंवा सॉफ्टवेअर कन्सल्टंट, टेक कन्सल्टंट आणि सॉफ्टवेअर कन्सल्टंट सेम आहेत? नहीं, डिफरेंस है। टेक कंसल्टिंग इज अ ब्रॉड टर्म, उसमें बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ कंसल्टिंग आते हैं, बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक्सेट्रा। सो फॉर नाउ लेट्स जस्ट गो विथ टेक कंसल्टिंग। नाही, मग तुझा रोल काय असतो? म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हाऊ डज युअर डे लुक लाईक? ओके, सो मैं फंक्शनल कंसल्टंट हूँ। ओके, सो माझा रोलमध्ये मला काय करायचं आहे, मैं बहुत ब्रॉडली समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई गो टू अ क्लाइंट एंड द क्लाइंट हैज सम और द अदर रिक्वायरमेंट्स कि उनको कोई रिपोर्ट्स बिल्ड करने हैं, उनको कोई प्रोग्राम बिल्ड करना है वगैरह वगैरह एंड ऑल, एंड दैट इज द रिक्वायरमेंट कि ये प्रोग्राम से उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा या फिर उनका कॉस्ट कम होगा और समथिंग लाइक दैट। So they come with that requirement to the consultant. Now there are two forms to the tech consultant itself. एक है functional consultant, एक है technical consultant. So I am in the functional role. My job is to understand the client's requirement and then suppose उनको कोई प्रोग्राम बनाना है तो वो प्रोग्राम का लॉजिक एल्गोरिदम वगैरह ना, बिकॉज आई हैव डन आईटी इंजीनियरिंग आई नो हाउ द प्रोग्राम वर्क्स। सो वो डिजाइन मैं करता हूँ एंड देन आई गिव दैट लॉजिक टू माय कोडर। So the coder will code that logic for me. I'll run the programs, I'll test it whether it's working fine or not, and then come back to the client saying that hey, this is your program or this is your report that you were looking for. आप test करो अगर आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, something like that. So major role जब मैंने start किया था, most of my role was this only, trying to understand the client's requirements and then build solutions around it, guide the technical consultant to build a program or a report regarding that and then come back to the client. But ये बहुत broad definition है, इसमें काफी front and back, हाँ बहुत बहुत कुछ होता है इसमें। Yeah, of course. Uh, Yeah. so my next question would be, what is that one thing that challenges you the most? मतलब ये जॉब में जो भी तू कर रहा है अभी, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग या सबसे चैलेंजिंग ही बोल सकते हैं, चैलेंजिंग क्या चीज लगती है? सबसे ज़्यादा challenging, I think see, you get to deal with a lot of new people and the thing about consultancy is तुम हर बार सेम बंदों से interact नहीं करोगे, you will get new people every time. So the most challenging thing is to deal with those kind of people. Not everyone is going to be as easy, not everyone is going to be as tough. So आपको कुछ भी करके आपका काम निकलवाना है, right? If the client is being very hard on you, फिर भी you have to have that skill to play the game in that way कि आप उनको भी hurt ना करो, side by side आपका काम भी similarly कर लो. So that is quite challenging, that is quite interesting about the job that I do. Simultaneously you have to take care of the inside also, so you're the middleman kind of a thing, right? Because आपको internally भी अपनी team को ये करना है, plus externally आपको clients को संभालना है, so something like that. So that is quite challenging, yeah. So यहाँ पे तेरे सॉफ्ट स्किल्स काम पे आते हैं, if I'm not wrong. I guess so, yeah. And what is that one thing that you enjoy the most? मतलब बहुत ज्यादा खुशी मिलती है तुझे ये जॉब करने में? Again, the kind of people you meet. So मुझे बहुत मजा आता है जब बहुत diverse crowd से मेरा interaction होता है. So I have had conversations with the people who are working at the plants as well. मतलब I can't say the lowest level job or whatever, but hierarchy में जो who don't surface in the
front. Okay, मैंने उन लोगों से भी बात की and all of them also like know me very well. Simultaneously, I get to go in meetings with like CEOs and CXOs of the company. So the kind of people that you meet and the diverse crowd that you meet, and सबसे अलग अलग कुछ ना कुछ सीखने मिलता है. So काफी अलग अलग जोग्राफीज वगैरह से भी आप लोगों से बात करते हो. मैंने लाइक इंडिया में ऑल ओवर प्रॉब्ली हर स्टेट में किसी ना किसी से एक बार तो बात की ही होगी, ईदर वर्चुअली और फिजिकली, एंड समटाइम्स आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो. सो सीखने मिलता है काफी कुछ नया. एंड कंसल्टेंसी में भी लाइक पीडब्ल्यूसी इटसेल्फ इज अ वेरी बिग फर्म. उसमें से कंसल्टेंसी इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट, मतलब अ गुड पार्ट ऑफ इट, बट उसमें और बहुत कुछ भी होता है. सो आप जब ऑफिस जाते हो तब यू गेट टू नो के यार आपने अपने टेक कंसल्टिंग को छोड़ के भी बहुत कुछ है पीडब्ल्यूसी में. सो आई गेट टू लर्न समथिंग न्यू एवरी टाइम आई गो टू द ऑफिस. So it's like your weaknesses as your strengths and your strengths as your weaknesses. नहीं Uh, नहीं, वीकनेस नहीं बोल सकता, बट हाँ. the challenge basically, yeah, makes sense. करेक्ट. या So, या next question I would like to ask Mayur is, mm, so you decided to come into IT consultancy by choice or not by choice? But अगर मेरे राइट. पास option है कि मुझे IT में मेरा I mean I've done my engineering in IT और मुझे अभी IT consultant बनना है, sorry tech consultant बनना है, हाँ तो हाँ. how will I know that, और कैसे, how will I understand, कैसे पता चलेगा मुझे? सी आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ द थिंग कि आपको कभी पता नहीं होता. Whatever you do, like 99% आपको शायद पता होगा, 1% डाउट आएगा ही कभी ना कभी, राइट. Sometimes you just have to take that leap of faith. But if you're asking me कि अगर किसी को बनना है टेक कंसल्टेंट, तो what is the way for it? So I have an answer for that. So आप इधर engineering के through आ सकते हो. So the people that I'm working with right now, not all of them are IT engineers. कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई EXTC इंजीनियर है. मेरे टीम में एक एरोस्पेस इंजीनियर भी है जिसने बाद में MBA किया. सो इंजीनियरिंग करके आप ये फील्ड में आ सकते हो, आप MBA करके आ सकते हो. देयर आर सम पीपल हु आई वर्क विद हु आर नॉट इवन इंजीनियर्स और MBAs. कल इनफैक्ट मैं जो मीटिंग में गया था, so PwC में this one person who was with me, she was an art student. She had done her masters in sorry, bachelor's in economics, and even she is working at PwC right now. So like I said, कोई एक वे नहीं है आने के लिए, राइट. एक बार आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है, यू ट्राई टू फाइंड आउट कि उस फील्ड में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द काइंड ऑफ वर्क दैट दे आर डूइंग, और व्हाट स्किल्स डू दे रिक्वायर. आप कोई ना कोई वे से आप वहाँ पे पहुँच जाओगे. लाइक देयर इज नो वन सिंगल पाथ टू कम टू वेयर आई एम. There are enough job opportunities in this field? Absolutely, definitely. We are still, in fact, we are looking for a lot of people to work with us, and I'm pretty sure other companies are too. So job opportunities तो काफी है. Next is, I decide I want to become a tech consultant. Now, what Okay. would you suggest I should have the skills? मेरे में कौन सी skills है? So हाँ, yes. I'll tell you. So tech consulting में अभी let's take an example of some competency. Now tech consulting में अलग अलग competencies होती है. Suppose मैं SAP पकड़ता हूँ. SAP is a software that it's a German company. Okay. अगर आपको SAP का tech consultant बनना है, you will have to have some knowledge of SAP. वो आपको ऑनलाइन कहीं मिल जाएगी. There are some paid courses that you can do. Then there is some other software called Salesforce, if you have heard of it. तो उसका भी consultancy है. Salesforce. 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 Yeah. So if you want to be a Salesforce consultant, आपको उसके कोर्स या वगैरह something कुछ करना पड़ेगा. So first you decide कि आपको कौन से field में interest है. Then you look at the tools that you can use to get into that field, and maybe get some mastery over that tool. So through that you can get it. So, for example, I am in my third year of engineering, and I know that I want to get into tech consultancy. So, so how do I approach people? Like you said that we have to ask people, get to know people, what they are using, what programs or what software they are using. So, Right. how do you know Right. that? How do we reach Uh, people? I think nowadays the best option is LinkedIn, because आपको LinkedIn पे clearly पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वगैरह वगैरह. And the best thing about LinkedIn is that people are very approachable. आप कभी भी किसी को भी मैसेज कर लो LinkedIn पे. I don't think there's barely anyone जो आपको मना करेंगे. अगर शायद आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, that is probably because they are busy or something. But I remember myself कि अगर मुझे मेरे पास कोई मैसेजेस आते हैं, I don't think I've ever not replied. And same goes for me. Like मैंने भी जितने भी लोगों को मैसेज किया होगा LinkedIn पे, एंड चाहे वो कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, आई एम प्रीटी श्योर मुझे 99% ऑफ द टाइम रिप्लाईज मिले हैं. कई बार ऐसा भी हुआ है कि 2-3 महीनों बाद भी रिप्लाई आके
replies आए कि I'm sorry, I was busy, I couldn't reply at that time, and then I got a reply. So LinkedIn is, I think, one of the best ways to get in touch with people who are working in the field that you want to go to. And does internships help? Do internships help? Internships definitely help. So like I said, when I was in the third year, I was interning at PwC. So because they saw me work for 2 months and they kind of liked my work, I think, so I got a PPO. So internships, I think, are a great way to get into what you want to, and they help you gauge it very well, right? आप 2 महीना जब काम करोगे उसमें आपको पता चलेगा कि शायद what is the day to day life looking like. तो LinkedIn से ज़्यादा insight आपको तो definitely internship से मिलेगा. अब ये तो आईटी इंजीनियर के बाद टेक कंसल्टेंसी में अगर किसी को जाना है तो देन द रूट विच यू एक्सप्लेन, बट नाउ आई वांट टू बी एन आईटी इंजीनियर इटसेल्फ, सो व्हाट आर जॉब अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन दैट? Oh, there are millions of job opportunities as an IT engineer. Like I said, आप coding कर सकते हो, front end, back end. You can go into AI, ML. बहुत बहुत vast field है. I mean, if I start, I won't be able to stop. So there's a lot you can do in IT. I think the whole world is moving towards automation. So like I said, बहुत कुछ है IT में करने के लिए. There's no one specific answer. And now, for example, I'm in 10th standard or 12th standard. How would Right. you suggest somebody to decide their, for example, I've decided I want to do engineering. So how would you suggest them or guide them? How should they decide or choose their branch, like engineering branch? Right. Right. So I would suggest something that I never did and I probably should have. अगर आपको कोई कॉलेज में जाना है, if you think that you want to get into this college, I suggest personally, अगर वो physically reachable है, for example मुंबई में हूँ मैं और VJTI मुंबई में, आप VJTI के बाहर जाओ, आप वेट करो कॉलेज खत्म होने का, उसके बाहर स्टूडेंट्स आएंगे, आप प्लीज वो स्टूडेंट से बात करो. स्टूडेंट्स आपको बेस्ट एडवाइस देंगे अबाउट द ग्राउंड रियलिटी दैट इज हैपनिंग इन द कॉलेज, कैसा है स्टूडेंट लाइफ, वो आपको जेन्युइनली फेयर आंसर्स देंगे. तो डू दैट. अगर वो स्टूडेंट्स आपको, अगर आप कोई ऐसी कॉलेज में जाना चाहते हो दैट इज नॉट फिजिकली रीचेबल इन योर एरिया, you try to reach out to the students on LinkedIn or Facebook or whatever you can get your hands on. आप communities देखो, आप Twitter वगैरह पे, अगर आप, I mean, you can build your own community. There are some people who are very active on Twitter, and they are, some of them are like associated to some colleges or whatever. Then there are some people who write on Quora specifically for some colleges. There are some people who will upload YouTube videos specifically to some colleges or something. So you can reach out to people like that. And I would really suggest that rather than taking a leap of faith, first talking to someone who has already been through it will really help. Of course, I mean, experience. Yeah, And correct. now, what do you think is your growth path? मतलब टेक कंसल्टेंसी में तो अभी है, but what is ahead of this? What is the future of this? Do you know anything? I don't know. So मैं इतना एडवांस में कुछ प्लान करके रखता नहीं हूँ कि आगे क्या करना है. आई मीन, आई लाइक टू टेक इट एज इट कम्स, सो वन डे एट अ टाइम देखते हैं. सो शॉर्ट टर्म में बेसिकली आई एम प्लानिंग टू डू माई मास्टर्स सून, एंड मैं देखता हूँ आगे व्हाट इज द वे फॉरवर्ड. बट suppose if you're asking me what is the way forward for a tech consultant in a company like PwC, then you can always climb up the ladder, associate to senior associate to manager, senior manager, director, partner, या फिर आप स्विच करके आपको इजीली प्रमोशंस वगैरह मिल सकते हैं if that is the demand of the hour, if that is the need of the hour. For example, COVID में काफ़ी job opportunities थी. So I know someone who was an associate in a company that I won't name, and he switched to another company that I won't name, but he got a job of senior associate. One senior associate was planning to leave a company and he got a job of a manager. So वैसे also you can kind of accelerate your growth if you want to. But yeah, I suggest, पर्सनली ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप कोई कंपनी में थोड़ी देर इनफ काम करो, देन यू विल रियलाइज हाउ थिंग्स वर्क इवेंचुअली. बिकॉज आई हैव सीन आजकल ये कल्चर काफी जस्ट वर्क इन अ कंपनी फॉर अ ईयर एंड देन मूव टू अनदर कंपनी. पहले मुझे भी ऐसा लगता था, मैं भी ऐसा सोचता था, बट इन हाइंडसाइट आई थिंक now that I've spent a couple of years in my company, now I'm getting more exposure than I used to, than I ever would have if I just would have been in the company for a year. Because आप नजर में तब आओगे जब आप एक्चुअली कुछ सिग्निफिकेंट काम करोगे, और एक साल इज वेरी लेस टू डू सिग्निफिकेंट वर्क. Nice. This is interesting. And Yeah. well, coming this from a youngster is something which is rare these days. Uh,
Thanks for telling all of this, Mayur. Two things which I felt were really amazing and like eye-opening. One was go to colleges physically, be it digitally if not possible, and connect to the students. So one thing which was really helpful, and I would suggest every 10th standard, 12th standard, even the parents to go to different colleges, meet the students and get a clear idea. And the second which you said was be in the company or like stay and then try to explore more and you'll obviously there are more opportunities that lie ahead. So या those आई मीन हाँ सॉरी the सॉरी सो yeah, बेसिकली ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है मैं भी until it happens to you you know you won't believe it तो पहले मुझे भी लगता था यार मजा नहीं आ रहा है etc but then when I was patient with it and I gave myself some time now I'm getting some opportunities which are like great and it I'm really seeing the way forward right now yeah. because you know sometimes you know how Marcus Aurelius says the obstacle is the way so you need that obstacle in your path to realize कि आगे क्या है. Nice, interesting. So Yeah. Mayur, last thing I want to ask you is, uh, I mean, this is very funny way to ask, but how do I decide my career? I'm a 10th standard, just passed my 10th. How do I decide my career? Uh, I'll give a very I don't know cliched answer in a way and a very unorthodox answer also simultaneously. Basically, what I feel, आप 10 चीज में हाथ पैर मारो आप चार चीजें ऑलरेडी निगलेक्ट कर दोगे आपको 6 चीजों में और मजा आएगा वो 6 चीजों में और थोड़ा ज्यादा हाथ पैर मारो यू विल रियलाइज अरे नहीं इसमें से और 2 चीजें मुझे मजा नहीं आ रही है rather than picking one thing and going for it I'll suggest do the opposite so मैं I read a lot about Charlie Munger if you don't know he's Warren Buffett's partner okay Okay. and he basically says this thing that I believe in a lot invert always invert so rather than picking something and going after it and then realizing कि यार मुझे ये नहीं करना है I would suggest invert करो आप ये decide करो आपको क्या नहीं करना है and you just start eliminating those options that you don't want to do eventually you will land up where you want to be. So ये CET का one of the trick भी था ना, eliminating the options and then Yeah, definitely works a lot. yes. Thank you, Mayur. Again, thanks again. So before we stop or like before we end this conversation, I just give a disclaimer every time that this journey which Mayur shared with us was his own individual journey. We can always get inspired by him, but please have your own journey. Go to colleges and check what is the latest exam pattern or whatever it is. Thanks a lot, Yeah, Mayur. Again. thanks a lot Isha, thank you for having me. Bye bye.